Hi, sorry, guys, थोड़ा लेट हो गया. So now we can start. Mm, I'm going to share my screen. सर मेरा इशू है तो लास्ट में दिखाओ क्या? Sorry, थोड़ा मेरा इशू था इसमें कोड में, तो लास्ट में दिखाऊं क्या आपको? चैट में डाल दो. वो सुन नहीं पा रहा हूँ. So my screen is visible, guys. Good evening, sir. Good evening. My screen is visible. Yes, sir. Okay. So yeah. Okay. So basically, in last lecture, we have some issues inside our project. So now we are going to solve it. And where we are inside the project is, give me a second. Yes. So what we have to achieve, we want whatever the amount is here, we want to integrate a payment gateway, which means what? We are going to handle this amount or this e-commerce billing amount with the payment processor. So we are using Braintree uh, package, NPM package of React. So this package helps you to uh, like helps you to integrate the payment stuff or whatever you are going to pay. The amount is going to pay with the Braintree payment gateway and all the processes coming from then after all the processes coming from the Braintree application. So the problem is that मैं एक बार कोड भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया था. So this get card amount gives you the amount, whatever the total amount of your card, it is shown here with the help of this get card amount function. So this function is called from here where we have the total amount rupees get card amount. So whatever the amount is printed by this get card amount function. After that, we have uh, we have something called show checkout. This is a function which means what? If the user is authenticated, it means if the user is logged in, then we are going to show this show drop in function if the user is logged in. Otherwise, just redirect the user to the login page. So it means what? Yeah. So what it means, if the user is authenticated, then this function is going to be called, and this function is this. So drop in. So this drop in function basically do what? It calls the drop in package, which is a npm package to handle the Braintree payment gateway. So this drop in called that package with these two things. First is this authorization, which is coming
whatever you are going to store in this client token. So what is this client token? You have already know that about this client token. So yes, we are calling whenever the user data is changed, then we are going to call this generate token function. So generate token function take calls this generate Braintree client token. So this is imported from this APIs folder. So here its definition is written. So we are going to make a request to get a token on add to cart page. So okay, so this is my here's my add to cart page. Let me open from here. Okay, so this generate Braintree client token is API which takes this ID and token and gives this some data. So if it is if your token Braintree token is generated successfully, then you are going to store this token inside this payment data. What payment data state? So you have set this payment data to whatever is coming as a token from the Braintree is just stored inside this payment data dot what client token. Does it make sense? समझ आ रहा है ये? So after that, we have the token inside this client token. So now we are going to make a request. So after that, whenever the show drop-in is called, because the show checkout is called from the GSX. So here say show checkout is called, and then this show checkout function called this authenticated function. So it returns true because is authenticated is true because user is logged in, then you are going to render or you are going to call this show drop-in function. So inside this show drop-in function, if the payment data dot client token is not null, मतलब इसके अंदर client token है और cart list की length 0 से greater है, then we are going to return this drop-in package. So I have commented it out, and now I am going to just uncomment it. So it means what? Yeah. So I have uncommented, and now you have this drop-in, and here inside this drop-in we have two props. First, we have to give options, and second is on instance. So inside the options, you have to provide the authorization token. And this authorization token is what? Your client token. So, yes, अफजल साहब बताओ. सर एंड में बताता हूँ, अभी क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं. इस कोड में इशूज है या कोई तुम्हारा कोड है उसमें इशूज है? नहीं, मेरे कोड में इशू है सर, मैं एंड में बताता हूँ. Okay. So we have two props. First is option and second is on instance. So inside the option, you have to provide the authorization key. So whatever the payment data dot client token which is stored inside your state, so you are going to provide this key with provide this value to authorization key. And second, on instance is a callback which take this instance, and on the basis of that instance, it is set. It gives this instance to what? Your state. So your payment data dot instance is now an empty object. So whenever this drop-in package is called, then a single instance is going to be triggered. So whatever this instance is, it is stored inside this state, which is payment data dot instance. तो अब क्या है कि मैंने सो ड्रॉप इन बना दिया है. अब मेरा पेमेंट डेटा और क्लाइंट टोकन भी है और कार्ट लिस्ट भी है, उसकी लेंथ 0 से ग्रेटर है. तो मैं चाहता हूं कि सो ड्रॉप इन कॉल हो. So here, when I refresh my page, then
Okay, just save it. And now, yes, you have um, successfully called this package what? This package a drop-in, which is this Braintree Web Drop-in React, and it gives you a card authorization. So you have a Visa, you have the MasterCard accepted, you can accept the Amex, you can accept the Discover card, you can accept the UCB cards with these details. Does it make sense? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Guys, Yes, sir. अरे पेमेंट गेटवे सीख रहे हो सब, कुछ तो स्पार्क लाओ. Yes, sir. हाँ, तो ये पेमेंट विद कार्ड, और ये अभी क्योंकि यू आर यूजिंग अ सैंड बॉक्स, और जब तुम लाइव इन्वायरमेंट पे जब आप इसको डिप्लॉय करते हो, तो लाइव इन्वायरमेंट पे व्हाट यू हैव टू डू, you have to just change this environmental variable from developer to a live environment URL. तो उससे क्या होगा कि ये लाइव से कनेक्टेड हो जाएगा, तो वहां पे एक्चुअल पेमेंट प्रोसेसिंग होगी. यहाँ पे जो आप इंटीग्रेट करोगे वही कोड वहां भी काम कर रहा होगा, बस आपकी इन्वायरमेंटल वेरिएबल चेंज हो जाएंगी, तो जिनसे इस वैल्यू से तुम्हारा एक्चुअल पेमेंट हो रहा होगा. इज इट ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes. So now you have this pay with card option. So now what you are going to do, you are going to use, you are going to provide the card number and expiry date, and then when you click on this pay button, then it redirects you or it gives you some message. So we are going to handle this functionality. So yeah, give me a second. Okay. So yes. So here inside the so drop in, we have a pay button. So what we want, when we click on this pay button, then it gets all the details of your card number, expiry date, as well as your amount, and process your request. So for this, what you have to do, you have to handle a on click event handler. So this on click is going to call process products. So I am going to make this function here. So const process products, which is a arrow function. So this arrow function, now what you have to do, because you are going to process uh, this card details for the amount deduction from your bank, so you have to create two variables here. So first variable is I'm going to create with a nonce. So nonce is basically what? It receives whatever you have provided inside a card number and expiry date, and is this card is valid or not, this nonce variable, you are going to take all the data and store inside this nonce variable. And then you have a second is a function, which is you can, or not a function, you are going to just save the whatever is inside your instance or your drop-in component, drop-in package, whatever
sending as an instance, we are going to we have stored this inside the payment data state. So whatever the instance is stored inside this payment data state, we are going to receive this inside this get nonce. So payment data dot instance. ठीक है? So, and now you have to, because you you have to receive their card details, so that for this reason you have to call a method which is inside the instance. So I'm going to console this what get nonce, and let me just comment it nonce, and I'm going to click on okay. So let me check this instance. Yes, you have an instance, a client component ID, drop in wrapper events, and all this stuff. So I have to call a method which is inside this instance. So we have something called, give me a second. Okay, let me call it from here. So payment instance dot request payment method. So because you are making a call which is basically on another server, अब यहाँ पे तुम ये जो कॉल कर रहे हो रिक्वेस्ट पेमेंट मेथड, this is basically you are calling from one server to another server. Here your API is running on localhost 5000, so you are going to make a request from localhost 5000 to what, sorry, your front end application is running on localhost 3000, so you are requesting from localhost 3000 to another server. So another server, here the another server is what, your Braintree सर्वर. सो यू आर गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट कि प्लीज मुझे इंस्टेंस प्रोवाइड करो और ये पेमेंट मेथड कौन सा इन्होंने अप्लाई करा है उसके पूरे डिटेल्स दो. तो जब आप किसी एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हो, देन दिस कॉल इज व्हाट, दिस कॉल इज बेसिकली अ प्रॉमिस. तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने का दो तरीका है. एक तो तुम सिंपल क्या कर दो, एक्सियोस से कॉल कर लो. मैंने बताया ना बहुत जगह हमने एक्सियोस डॉट गेट एक्सियोस डॉट पोस्ट यूज करा है. बहुत जगह एपीआई रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए लोग प्रॉमिस यूज करते हैं. तो यू, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. whatever you are going to do, you are going to handle with promise or you are going to handle with async await keywords. But in modern browsers or ES6, async await is basically introduced in ES6, or it is an interview question like, what is the difference between promise and the async await? So both are doing same thing, but async await have some what mm, some benefits over the promise. But here we are going to handle with the promise. आप बहुत जगह async await दिए देखे हुए हो, तो हम promise से handle करते हैं. तो ये एक मेथड है, तो इस पे हम कॉल करते हैं. तो प्रॉमिस रिजॉल्व करने का दो तीन स्टेज होता है. एक होता है पेंडिंग, एक होता है रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट. तो डॉट देन से हम क्या करते हैं, प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं. तो डॉट देन एंड हियर यू हैव व्हाटएवर इज कमिंग इनसाइड द डेटा. तो आप जो भी चीज आएगा पेमेंट डेटा डॉट इंस्टेंस डॉट रिक्वेस्ट पेमेंट मेथड से, वो जो भी डेटा आएगा वो हम इस डेटा में स्टोर करेंगे. एंड हियर व्हाट यू कैन डू, you can simply console it out, console.log, and आप यहाँ लिख सकते हो send nonce to the sorry
and nonce to process the payment. ठीक है, चलेगा। और इसके अंदर जो भी डेटा के अंदर आ रहा है वो डेटा आप देख लो। चलो आपने देन लगाया है, आपने प्रॉमिस को रिजॉल्व किया है, तो रिजॉल्व के साथ आपको रिजेक्ट भी करना होता है, तो रिजेक्ट के लिए आपको कैच ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, और कैच ब्लॉक में आप एरर लोगे। और ऐसे ही तो ਅਸੀਂ कभी भी रिजॉल्व करते थे ना। Yes, sir. तो एरर हो गया, और एरर में आप क्या कर दोगे, कंसोल कर लोगे, कंसोल डॉट लॉग एरर एरर। Now, now it is okay. So what you can do, you have a request payment method dot then data, and if data is coming, then you are going to console this data. Otherwise, you are going to store whatever the error is coming, you are going to store inside this error block. So yes, and now ठीक है, तो प्रोसेस पेमेंट्स को हमने कॉल कर रखा है. So we have called here when we click this button. So let me check. I'm going inside my console browser and just hit this pay button. Okay. So when we click on this pay button, then it gives you validation error as well. So you have, please fill the card number, please fill the expiry date, please check your information and try again. So what it means, whenever you call this process products, then we have this method is called and it gives you some error. So ये हमारा काम कर रहा है. So अब देख लेते हैं सक्सेसफुल डेटा के साथ. तो वो आपके लिए आई थिंक ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ ये डिटेल्स. यस, ये कार्ड नंबर लिया है and now card is not valid. So you have to provide a correct card details. So I think, let me check the correct card dummy details for the Braintree NPM React package. So let me check. कोई तो कार्ड डिटेल्स दे दो. ब्रेन ट्री एक बार मैं ना 11 से ट्राई करता हूँ. 11 0 0. लेट मी चेक विथ 0. मेरे पास है कार्ड नंबर, दो क्या? बताओ. ये अपना एक्चुअल नहीं बताना. सर क्लोज कार्ड है, मतलब ये एक्टिव नहीं बताओ, है. कोई क्लोज कार्ड का डिटेल्स बताओ.
वीजा कार्ड होगा, वीजा कार्ड की डिटेल्स बताना अगर वीजा है तो। सर हाँ सर 6200 6200 42 42 42 हाँ 13 4243 6813 6813 9292 9292. I okay. We have some card details. Okay, let me check my notepad. वहाँ पे मेरे और भी details हैं, तो इसमें मैं एक बार check करता हूँ. Give me a second. Yes. So we have some details. We are going to use it. My screen is visible. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we are going to use, we are going to use this details. So card number we are going to use is 41111111. Okay. So when I tried this, it takes, and yes, it returns a Visa card. So it is a Visa card, and the expiry date is 11/22. So let me check. Yes. 11/22 और 22/11. No, 11/22. So I'm going to hit this button. No payment method is available. सर एक्सपायरी डेट ना फ्यूचर डेट रहेगा. Sorry. एक्सपायरी डेट में फ्यूचर डेट रहता है. हाँ तो 11/22. ओके तो 11/30. 11/26. हाँ. Yes. Now send nonce to a process to payment, and it takes, and this ending the Visa card, it returns this as a data. So inside this data, what we have a bin data, we have a description, we have a details, we have a nonce, and then we have a type. So it takes this card as a credit card. बिकॉज देखो अभी जो तुम चीजें कर रहे हो ना, दिस इज समथिंग कि तुम डेवलपर टूल्स के लिए कर रहे हो. तो डेवलपर के लिए, बिकॉज यू हैव टू, लाइक व्हेन यू कोड, देन यू हैव टू टेस्ट योर डेटा लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर यू आर गोइंग टू डिप्लॉय इट इनसाइड द प्रोडक्शन डेटा सर्वर. सो द पॉइंट इज दैट कि वहां पे आप एक्चुअल डिटेल्स को यूज नहीं कर सकते हैं. व्हाई इट इज सो? बिकॉज अगर आप एक्चुअल डिटेल्स को यूज करोगे, मान लो कि आपने 10,000 का रिक्वेस्ट बनाया, वो 50,000 का हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये जो कंपनीज होते हैं, ये पहले तुम्हें डेवलपर इन्वायरमेंट देते हैं, एंड उस डेवलपर इन्वायरमेंट पे
आप टेस्ट कर सकते हो अपने कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स के साथ, एंड उसके बाद this works for the production server as well. Does it make sense? Yes, sir. So we have this Visa card, so ending with this number, and it returns some another user interface. And we have something called nonce, and inside this nonce we have some token. So we are going to store this token, and this token, because this token is something which is beneficial when you process this token, process this amount. So what we can do, I'm going to just save it inside this products. And so what I'm going to just just uncomment this nonce, and inside this nonce, whatever is coming as a data dot nonce, we are going to store the nonce inside this nonce variable. So what you can say, so you can simply use this nonce, whatever we have stored inside this nonce, it is an empty variable. So nonce is equals to data dot nonce. And that's it. So let me use this nonce here. And so, okay, nonce is assigned, but I think the point is what, uh, can I use this var instead of nonce? Mhm. Let me use const. Okay. We can use let here, but why it is not? I'm going to just use XYZ or nonce data, and this nonce data is here. Mhm. Okay, so what we can do now, why this variable is not taking because of some ESLint issues, it is type strictly type checking the your whatever you have written as a data type. So I'm going to make another here state, and this state is what, const nonce and set nonce, and this is basically a string which is coming here. So use state, and inside this I'm going to open an empty string. So you can do here from, yeah. So I'm going to remove this nonce data, and then just use set nonce is equals to data dot nonce. Does it make sense? Yes. And now inside this error block, whatever it is coming inside the error, when you process your products for the payment, then you are going to store the error inside this payment data variable. So payment data dot error should be what? Whatever you have received as an error when you process your amount. So I can do one thing, just removing this console, and inside this console, set payment data should be, because it is an object. So whatever inside the payment data ऑब्जेक्ट वो तो आएगा ही, बट जो एरर वाली फील्ड होगी वो एरर वाली फील्ड इस एरर डॉट मैसेज में जो भी आ रहा होगा उससे रिप्लेस हो जाएगी. दैट्स इट. That's it. So what we can do, I'm going to, because we have this nonce, so everything is okay for now.
So yes, so we have whatever, okay, nonce is assigned but value is not used. Let me check. So okay, so just do one thing. I'm going to console this nonce here, console.log nonce nonce. ठीक है भाई, it is done. Let me refresh. I think yes. So अभी nonce empty है. So we are using this and 11. Please let me check. And yes, we have a nonce variable which is here, and inside this nonce, whatever is coming inside the token, we have stored it. And now, so yes, it is all right. And I have to just send whatever it is coming, the error. I'm going to show this for inside the toast package. So whenever you have entered the wrong details, one toast message is opened and it gives you whatever the error is coming inside your promise. So yes. Yeah. So for this, you have to import the not stick package. So import, let me take, we have used this not stick, sorry, note, yeah, notice tag. So inside this notice tag, you have used here, no, this is not here. You have to use this, use a snack bar, and then you use something like this. You have to extract the equal snack bar from the use snack bar, and then you have to send the masses as well as the variant inside the object. So let me do this here inside the add to cart page. So you have imported it, use a snack bar, and now you can simply abstract the equi snack bar, equi snack equi snack bar is equals to use snack bar. So I think let me check inside this. Okay. So this is equi snack bar. So yes. And now I'm going to make one use effect here. So this is a use effect. And inside this use effect, so as a dependency array, what we have passed. So whenever the payment data dot error is coming, then you are going to call. So I'm going to make a condition, another condition here. So payment data dot error, if it is here, then we are going to call this equi snack bar, and inside this equi snack bar, you are going to pass this payment data dot error. So let me check. And as a second object, you have to pass this variant
and this variant should be error. It is inside the string error. And let me do one thing. Mm, Variant is okay. I have passed something like this. So variant variant is error, and just let me fix it. Yeah, it is done. So just I'm going to click on pay button now, and let me check what is the uh, so I'm going to click on pay button, and yes, you have this toast message. No payment method is available. Does it make sense, guys? तो ये हमने टोस्ट मैसेज भी शो कर दिया है अपने एप्लीकेशन पे. तो अब हमें कार्ड डिटेल्स तो सही डालने पड़ेंगे. तो ठीक है, तो वी आर गोइंग टू हैंडल दिस कार्ड डिटेल, और उसके बाद हमें क्या करना है. एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ कि इसके बाद हमें क्या करना होगा. सो व्हाट वी कैन डू, सो फॉर दिस I'm going to make a API which handles your amount, process amount. So अब जब तुम कार्ड नंबर दोगे, एक्सपायरी डेट डालोगे, तो ये पे क्लिक करोगे तो एक टोकन के बाद एक और तुम्हारे पास क्या आया, नॉन्स आया, जो कि नॉन्स क्या करेगा, उस एक टोकन प्रोवाइड करेगा, एंड उस टोकन की बेसिस पे वट एवर यू whatever you are just getting the card details and the payment method, it is stored inside this nonce variable. So you have to provide this nonce and the user details to process this payment. So you are going to make a API to handle all the process stuff. So we are going inside the backend folder, and give me a second here. तो अब हम एपीआई बनाएंगे एक, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड पे.
So yes, we have to go inside the backend folder, and firstly we have to create the route. So inside the payment route, we have only one route which gives you a token on the basis of the user ID. So router.get, or so we have first we have to provide the URL. So URL should be what? Braintree payment, और मैं इसके साथ इसकी यूजर आईडी भी भेजूंगा. सो यूजर आईडी जो पहले में भी हम ऐसे ही भेज रहे थे. And then what you have to do, you have to make it protect, because you have to provide the authentication, and then you have to provide the controller name. So you have to just make this controller. So yes, you have to make a controller. So inside the payment controller, you have another method, which is what? Uh, Process the payment. So first, process payment. So it is also a synchronous function. You are not going to make a promise. So request, response, and then first, when you call this process payment, so just do console.log here. Okay, and just do all the boilerplate stuff. So we have a generate token, and then we have a process payment. So you have to call this process payment from this route. So just do something like this, process payment, and you have to pass this process payment here. And that's it. When you go inside this controller, you have to save it, and yeah. So I'm going to open a Postman as well. So just check it, the API is working or not.
So remove this console.log from here, and yes, you have. So firstly, you have to like, okay, so basically inside the route, when you make the payment routes, then it is not a get type of request. You have to make it a post type of request, because you have to provide the whatever the it is coming from the front end as a nonce, and apart from that, you have to provide the amount as well. So nonce gives you the card details, and uh, what amount, on the basis of that amount, you have to process all the things inside the backend. So yes, so here, firstly, I have to store the nonce thing. So nonce from the from nonce from client, it is request.body. तो अब देखना इसमें हम क्या रखेंगे. सो हम जो भेजेंगे वो पेमेंट भेजेंगे, तो पेमेंट मेथड नाम रख देते हैं, इससे समझ में आ पाए. नो. And second is amount. So let amount from क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड. क्लाइंट जब भी बात करूं तो फ्रंट एंड मान लो. तो एक तो नॉन्स मतलब पेमेंट के मेथड्स एंड ऑल. सेकंड इज व्हाट, अमाउंट. सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट. तो अब नॉन्स फ्रॉम क्लाइंट जो भी पेमेंट मेथड आ रहा होगा वो, और अमाउंट फ्रॉम क्लाइंट वो हम दोनों हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया. एंड नाउ यू हैव टू प्रोवाइड द चार्ज. तो अब क्या होगा कि जो भी तुम अमाउंट लगाओगे तो ब्रेंट्री खुद अपना चार्ज कुछ लेगा, क्योंकि इट इज अ गेटवे. सो यू हैव टू प्रोवाइड सम चार्ज फॉर द ब्रेंट्री एप्लीकेशन. सो वी like if your amount is something like 50,000, then you have to provide a 0.5% of the 50,000. So it is equivalent to what, 2500 रुपए. तो आपको ब्रेंट्री को क्या करना पड़ेगा, इट इज मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की बड़े अमाउंट्स होते हैं तो परसेंटेज बहुत कम हो जाता है. तो इट टोटली डिपेंड्स कि तुम्हारा गेटवे चार्ज क्या कर रहा है. और सारे स्टैंडर्ड गेटवे समथिंग लाइक पेपल और ब्रेंट्री हो गया या स्ट्राइप हो गया, वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट ही चार्ज करते हैं. तो इस पे हमें वो कोड को क्या करना पड़ेगा, कोड को हैंडल करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू ट्रांजेक्शन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा. So this is a new transaction, and this new transaction is what, gateway dot transaction dot. अब देखो ये गेटवे जो है, this gateway is something when we have just make the object from what, Braintree gateway. So we have to provide the environment, the merchant ID, the public key, and the private key. So when you provide these four things, public, private, and merchant ID and the environment, then you have created a gateway instance. So for this gateway, we have something called a client token, and now we are going to use a transaction. So inside this gateway object, you have a client token, we have a transaction. So on the basis of the transaction, we are going to just use gateway.transaction dot what, cell. So this cell is basically a method which takes object as a parameter. So I'm going to make an object here. And now inside the object, so I'm going to provide three things as a key value pair inside the object. First is amount. So amount is whatever the amount from client you have received here. You have to just provide that amount from client. And as a second key, the payment method.
So payment method nonce. This is something which is nonce from client. So yes, you have provided this nonce from client, and this is what the first object as a key you have to provide amount. Second is a payment method nonce, and the third thing which you have to provide is options. So inside this options, you have to make one boolean true, and this boolean is what submit. So I'm going to give me a second, because submit, it is like submit from the client or something like this. So let me do console here to check the name. So console.log and gateway, and this gateway. So yes, let me do it. So I'm going to just do here something like this. So so mm, just do one thing. Inside the process payment, we have, give me a second. So I'm just going to uncomment it. So let me check. So when we provide the options, you have to provide one boolean, which is called something like submit from, something submit for settlement. So this should be true. So okay, so you have provided amount, a payment nonce, and options, and then what you can do, uh, you can receive something like okay. So yes, so after this you can just pass two arguments, error and a result, and you have this error and result. And because what you have done here, first thing is you have provided this cell method, and as a callback of the cell, so inside the first thing you have provided this variables, and as a second argument of cell you have provided this callback function. So it gives you error as and a result. So if error, अगर error है अगर error है तो हमें 500 का इंटरनल सर्वर सेंड करना है. तो response dot status, and inside the status you have to provide a 500 with the JSON data, and this is error. तो ये तो error की handling हो गई. अगर ऐसा नहीं होता है तो else कंडीशन में हम response dot JSON सेंड कर देंगे और उसके अंदर रिजल्ट सेंड कर देंगे. So let me check. This result. I think it works because so now I am going to console the console.log new transaction
So I'm going to provide two things from a postman. So just do something like this. You have this Braintree slash payment slash user ID. So you have made it authorized. So you have to just, okay. User login API. So I have to provide the token because you have made it authorized. So let me send the token. So yes, you have received this token and you have to provide this token inside your API. So inside this API, yeah, so it is a post kind of request, and inside the headers, I have to provide the authorization key. So authorization where and then token, and inside the body you have to provide the JSON data, and two things you have to provide inside the JSON. First is what this first thing is what the amount. So request.payment method nouns. So first I'm going to provide this key, and the value of this key is whatever you have received inside the front end. So yes, you have received it, this nonce. Okay, so let me do this for you guys. Mm, okay, so just provide it. क्या था 11-23 था ना. So just click on pay and you have this nonce. So I'm going to provide this nonce. Okay. So instead of sending this, you have to provide this. And as a second object, for the second thing, you have to provide the amount from client. So request dot body dot amount. So you have to provide this amount. This amount, and it should be, you can pass something like this. And yes, I'm going to send it. And it gives you an error. Cannot post this. Why? Let me check my backend server. Okay. So it is basically a route problem. So I have to check my route as well. It is protect, it is process amount, Braintree.payment. Okay, it is a post kind of request. So I have provided a post kind of request with a authorization key, and you have provided the everything. API slash payment slash Braintree slash payment slash user ID.
Let me do here console. Just send a request again. Okay, so problem is this. Uh, mm, 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 mm. Payment routes, process payment, and basically the point is uh, mm, let me close the server and reopen it again. npm run server. ये CHS भी नहीं आ रहा है तो पोस्ट की तो आ रहा है इस पे इसको मिल क्यों नहीं रहा है तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें हमने यूजर लिया ही है हमने प्रोटेक्ट करा ही है ये हमारे कंसोल में आ भी नहीं रहा है What is so? Let me do another filter dot post entry slash payment slash user ID protect or sound. So I'm going to comment it. Let me check with this URL. Oh. वहां तक तो रिक्वेस्ट भी नहीं जा रहा है हमारा प्रोसेस पेमेंट
Let me do one thing. Process amount, process amount is a synchronous call, request as response, and inside this I'm going to post all the things. So process. Okay, so problem is what? Here is the problem. नहीं ये problem थोड़ी है. So I'm going to use this process payment, and inside the route so process amount है ना, so just take it inside the payment route.js and process amount, and let me check. क्या ये 8001 पे रन कर रहा है, कुछ दूसरे सर्वर पे रन कर रहा है, 8000 पोर्ट पे ही रन कर रहा है, तो ये पे स्लैश ब्रेनट्री स्लैश पेमेंट. मैं तो भाई शुद्ध करता हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. क्लाइंट टोकन है, ये तो रन कर रहा है गेट टोकन ब्रेनट्री डॉट. Let me try one thing more. Get payment and inside get payment and this ID. What is the problem यार? ये तो okay. Okay, for now it is okay. Now it is not making any request and you have some error. Okay, and this is the API slash payment slash braintree slash did payment to slash user ID. You have a process amount. So it is the issue. Give me a second here. Nonsense type of issue it is. Let me check on another. क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है. It is a post type of request inside a header. Authorization key. And it should be bearer. Let me check whatever we have provided as a token for the user. Is it the same user?
Okay. So others1@ikeda.com. And is it the same user? So for this, I have to uh, check my application tab. Hmm, Wait a second. Hmm, Application, and inside this application, we have a required login info. So I think no. So I'm going to use this token instead of using the whatever you have received because it is a others data. So I'm going to provide it is inside this authorization and then this token and whatever the ID of this user I'm going to provide here. Hmm, Login info, this ID. Hmm, It is hanged. Yeah. Give me a second. Hmm, ठीक है. So यार ये हैंग कर रहा है. Let me open Postman again. ये वाला स्टफ कैसे आ गया? प्रोवाइड करा नहीं है इसमें. ये कहाँ से है? यार ये बहुत हैंग कर रहा है. ठीक है, मेरी ईपीआई रेडी हो गई है. सो आई कैन मेक अ फ्रंट एंड और वहां पे हम चेक कर लेंगे बिकॉज यहाँ से एपीआई को रिक्वेस्ट बनाना इट इज समथिंग लाइक ये थोड़ा सा टफ है. तो मैं इसके लिए एक एपीआई बना लेता हूँ फ्रंट एंड के अंदर. सो इनसाइड माय सोर्स डायरेक्टरी, inside the APIs where we have this index.js where generate braintree token, I'm going to make another function here code const process payment. It is a synchronous type of request where you have to provide the user ID, you have to provide the token, and then you have to provide the payment data. तो ये हमें तीन चीजें प्रोवाइड करनी होगी and then we are going to make
this config and then you have to extract the data, await Axios.post kind of request, and inside this Axios.post, whatever this is, http/localhost 8000 API/payment, and let me just copy the payment route. So this is Braintree/get payment. So then after you have to provide this user ID. So basically it is a dynamic. So you have to use the literal string. So inside this literal string, you have provided the user ID, and then as a second object, second variable or second parameter, you have to provide this config, okay. So I'm providing the on wrong place because I'm going to provide it inside the literal string, but it is not possible. So here you have to provide the config, and then you have to provide. So before providing the config, you have to provide the body. So here inside the body, you are going to provide the something like this. You have already used inside the uh, what inside this actions. So something like this. No, it is a get kind of request. So whenever it is a post kind of request, like this, product form data. So it is basically an object, so you can provide it accordingly. So inside the index API.js, you can provide this payment data object, and that's it. So yeah. This kind of request. And now you can just return data format. So config, ठीक है, हमने config प्रोवाइड कर दिया है, हमने डेटा रिस्ट्रिक्ट करा, हमने पेमेंट डेटा प्रोवाइड किया, हमने डेटा रिटर्न करा लिया. अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम है. हमने कुछ गलती कराई क्या? एक मिनट, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? लास्ट ये देख लेते हैं एक बार. आर वैल्यू YASYNC sync ठीक है.
तो हमें लग रहा है ना ये सीधा बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट कोर्स इसके अंदर एक तो प्रोसेस पेमेंट को, दूसरा अरे यार मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना भूल गया हूँ। ये होता है इसमें पेमेंट डेटा whatever this is। ठीक है, तो हमने इस पे रिक्वेस्ट बनाया है, पेमेंट डेटा हम प्रोवाइड करेंगे और हम जो भी कॉन्फ़िग में हमने ऑथराइजेशन पास करा है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, तो इट विल वर्क फॉर यू। सो यस, आई थिंक सो कोई है क्या? हाँ, सो ठीक है, वी आर डन विद दैट और हमने पे इंटीग्रेट कर लिया, सिर्फ हमें इसको कॉल करना है। तो जब भी वो अमाउंट और पेमेंट डेटा के अंदर जो भी चीजें होंगी वो लेके जाएगा, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पे रिक्वेस्ट बनाएंगे जो कि कॉल करेगा इस पेमेंट कंट्रोलर के इस मेथड को, प्रोसेस अमाउंट वाले को। तो हम उसमें से पेमेंट मेथड निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे और उस तरीके से हम सेट करके उस डेटा को भेज देंगे। तो यस, दैट्स इट। So in next lecture, we are going to just complete this process things, and then we are just going inside the order part. And this is the last part where we have to implement the order stuff. And then, yeah. So किसी को कोई प्रॉब्लम है जो कहीं पे ब्लॉकर है या ब्लॉकेज है, तो ब्लॉक्ड स्टेट में हो तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट्स एंड ऑल। तो आई विल गिव यू। मेरा है। यस, जिसके कुछ ब्लॉकर्स हैं, जहाँ फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप बिल्कुल रेज कर सकते हैं। ये सर मेरा एक्चुअली ना, मैंने जो अपना ये रजिस्टर और लॉगिन वाला पेज है ना, तो मैं लॉगिन वाले पेज पे अपना ये लॉगिन पे हिट करता हूँ ना, तो मतलब कुछ भी डेटा, मतलब वो मुझे बैकएंड में नल आ रहा है, कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। तो अपने ये डाउट वाले से आपने कांटेक्ट करा था उनसे? सर वो कुछ और ही बताते हैं, उनको अगर हम बताएंगे ना इस चीज, तो वो मतलब अपना आप जो पढ़ाते हैं ना उसके अलावा कुछ और ही सिखाने लगते हैं। उनको मैंने 2-3 बार किया, बट वो लोग कुछ प्रॉपर देते नहीं है। अब जैसे हम लोग सीएसएस के लिए स्टाइल यूज करते हैं ना, वो बोलते हैं नॉर्मल यूज करो, मतलब इनलाइन सीएसएस यूज कर लो। वो नहीं हो रहा है तो देखो, ये क्योंकि अब जो पॉइंट है ना यहाँ पे, मैं मतलब अभी डेफिनेटली तुम लोग के डाउट्स को देख ले रहा हूँ और आई विल ट्राई कि मैं देख पाऊँ, बट पॉइंट इज दैट कि अगर दिस इज द टाइम वेयर तुम्हारे जो डाउट के टीचर्स हैं उनसे कनेक्ट करो और नहीं तो स्केट करो, बिकॉज ये टाइम है कि तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम्स को, बिकॉज नहीं तो फंसे रह जाओगे वहीं पे और 1-2 महीने के बाद तुम्हारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए कोई नहीं बैठा होगा। तो दिस इज द मेन टाइम, यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो, उनसे पूछो या जो भी कर सकते हो, बिकॉज डाउट पे कोई बैठा हुआ है वो तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए बैठा हुआ है। और जहां तक रही बात इनलाइन सीएसएस की और जहां तक रही बात सीएसएस की डॉट सीएसएस, तो आज के टाइम पे वही डेवलपर सीएसएस डॉट सीएसएस या डॉट सैस यूज कर रहे हैं जो सिर्फ यूआई के बंदे थे। यूएक्स वाले, कोई यूएक्स इन द सेंस कि यूजर एक्सपीरियंस के कोई भी डेवलपर्स सीएसएस यूज करेंगे ही नहीं, बिकॉज एज अ डेवलपर उनकी जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है, एंड inside the JavaScript you can write CSS, so that's why it is called CSS in JS। तो एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में
CSS लिखोगे, और इंस्टेड ऑफ अगर आप CSS एंड JS के कोई लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, समथिंग लाइक मटेरियल UI, MUI, टेलविंड CSS, चक्रा UI, देन यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग्स, क्योंकि ये तुम्हारे डेवलपमेंट को काफी इजी बनाता है, और तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन डेवलपमेंट पे होगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग UI पार्ट। अब तुमने देखा होगा कि कितनी चीजें होती हैं जो तुम्हें डायनामिक बनानी होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि दिस इज ओनली नॉट अ लॉगिन एंड साइन अप थिंग्स, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू हैंडल फ्रॉम बैक एंड एंड फ्रंट एंड एज वेल। तो जो चीजें बैक एंड की होनी है वो बैक एंड में होता है, जो चीजें फ्रंट एंड पे वो फ्रंट एंड पे हैंडल करना है। तो फंक्शनैलिटी वाले पार्ट पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, फंस रहे हो, तो ट्राई करो कि वो रिजॉल्व हो जाए बहुत जल्दी। चलो दिखाओ अफजल क्या प्रॉब्लम है, और अगर किसी और के ब्लॉकर्स हैं जो बिल्कुल फंसे हुए हो वो पूछ सकते हो अभी। दिखाओ अफजल। एक मिनट सर। हेलो सर। यस। हेलो सर, थोड़ी बात करनी थी। मैं 2 दिन से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सर। एक्चुअली मेरा मतलब लास्ट मंथ से थोड़ा लेक्चर कम हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास घर में मेडिकल प्रॉब्लम चालू था एक्सट्रीमली। मतलब अभी जब पिताजी को टेस्ट किया तो उनको डॉक्टर ने कैंसर बोला हुआ है। अरे यार। हाँ, तो उसके जैसे घर में अकेला होने की वजह से सब ऑफिस भी देखना फिर घर का भी देखना, इसके लिए कभी कभी मेरा क्लास अटेंड नहीं होता है। तो सर प्लीज मेरे थोड़ा अटेंडेंस मार्क कर देना सर। यार मैं बिल्कुल मार्क कर दूंगा था, बट मेक श्योर करो कि जो चीजें की गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको मिस करने से सिर्फ तुम्हारा घाटा होगा, मेरा या किसी भी नहीं स्टूडेंट का नहीं कोई। सर, वो जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, वो दिक्कत नहीं सर। रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो मैं देखते रहता हूँ सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टाइम मिला, क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, घर में अकेला मतलब अभी कमाने वाला नहीं, अभी एक्चुअली घर में तो कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी आई नो प्रैक्टिकली इट फेस करना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ हाँ इस चीज को, डेफिनेटली भाई। हाँ मैं सर। बैठ तो जाऊँ। ठीक है, सर तो थैंक मेरे यू को पिन कर देना सर। व्हाट्सएप पे एक बार। यस सर, मैं पिन करता हूँ। ठीक है। यस, किसका डाउट था, क्या प्रॉब्लम था भाई, बता दो, दिखा दो जल्दी से। एक मिनट। भाई सर्वर पहले ओपन कर लेते हैं, नेटवर्क टैब खोल लेना। चार सौ एक पे जाओ, क्लिक करो। अनऑथोराइज्ड है, तुम टोकन नहीं भेज रहे हो। टोकन अनऑथोराइज्ड मतलब पेलोड पे आना, पेलोड पे आना। एक उस पे आओ, नेटवर्क टैब के पेलोड पे आओ। पेलोड भी तुम्हारा एम्प्टी जा रहा है, रिव्यू दिखाना। हाँ, तुमने लॉगिन की ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजा नहीं है सही तरीके से, पेलोड एम्प्टी जा रहा है। तो पेलोड चेक करो कि पेलोड क्यों एम्प्टी जा रहा है, अपने फ्रंट एंड के एपीआई में आओ, वहां चेक करो डेटा क्यों नहीं जा रहा है तुम्हारा पेलोड। और लॉगिन की एपीआई को पहले चेक करो कि ऑथोराइज बना दिए हो क्या उसको। लॉगिन की एपीआई पे आना पहले, बैकएंड के उस पे, राउट वाली फाइल पे चेक करो कि
हाँ नहीं बनाया वो, कोई बात नहीं। अब आओ उस पे, और एक रिक्वेस्ट में देखो पेलोड नहीं जा रहा है। यहाँ पे आओ, अपने फ्रंट एंड पे आओ, कोड में और यहाँ पे आओ एसआरसी के अंदर जो यूजर एक्शंस बनाए हो, एक्शंस के अंदर यूजर एक्शंस खोलो उसको, यूजर एक्शंस पे जाओ। हाँ ये नहीं मिल रहा है इसको, यहाँ कंसोल करो। एब्स्ट्रैक्ट ही गलत तरीके से किए हुए हो ना, दिखाओ वहां से, यहाँ पे कंसोल लगाओ। कहाँ पर सर? थोड़ा ऊपर आओ और ये लाइन नंबर 5 के नीचे कंसोल लगाओ, 5 के नीचे नेम ईमेल को कंसोल करो। ये रजिस्टर में क्यों कर रहे हो भाई? लॉगिन वाली एपीआई में करोगे ना, यहाँ से हटाओ, लॉगिन की एपीआई में हो, यहाँ ईमेल पासवर्ड लाइन नंबर 34 के नीचे कंसोल लगाओ। भेज ही नहीं रहे हो तुम, आना नीचे, नीचे आना, नीचे आना। ठीक है, यहाँ कंसोल लगाओ, ऊपर ही कंसोल लगाओ, ईमेल पासवर्ड कंसोल करो। यहाँ करो कंसोल। एक और हाँ चलो ठीक है, अब देखो वहां पे कंसोल, लॉगिन किए पे ऐड करो, देखो ईमेल पासवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, कंसोल में जाओ, कंसोल में जाओ। भेजो, लॉगिन करो। हाँ ईमेल पासवर्ड डिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है। आओ कोड में आओ, और यहाँ पे आओ, पेज में आओ, लॉगिन वाले पेज में आओ, पेजेस के अंदर लॉगिन पेज डॉट जीएस वाली फाइल में आओ, साइड में तो है। हाँ अब यहाँ देखो फॉर्म डेटा तुमने सेट करा हुआ है। नीचे आओ, नीचे आओ, डिस्पैच कर रहे हो ईमेल पासवर्ड फॉर्म डेटा में से, यहाँ लगाओ कंसोल, एक लाइन नंबर 26 के नीचे, और फॉर्म डेटा कंसोल करो। एक कंसोल लाइन नंबर 28 के नीचे लगाओ, इसमें ईमेल कंसोल करना। ईमेल के आगे स्ट्रिंग पास कर दो ना। सेव करो, लॉगिन की पे ऐड करो। सेव ये पहले कंसोल क्लियर कर देते भैया, साफ कर देते। ठीक है कोई नहीं, आप करो लॉगिन। ईमेल अनडिफाइंड आ रहा है। अरे देखो भाई क्या किए हुए हो, ईमेल का ई कैपिटल है, पासवर्ड का पी कैपिटल है, तुम यहाँ पे रिसीव कर रहे होगे ई स्मॉल और पी पी ए स्मॉल, तो ई का ई कैपिटल टाइप कर दो लाइन नंबर 28 पे। जो तुम ईमेल निकाल रहे हो ना, ईमेल का की ना ई से, बड़े वाले ई से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से पासवर्ड करो, पी का पी कैपिटल करो, सेव करो, ये पे ऐड करो। ये स्लेंट की सूज आ गया। अच्छा तो यहाँ से पास कर दो ना, ये डिस्पैच में जो 30 नंबर लाइन में है, वहाँ ईमेल का ई कैपिटल करो और पासवर्ड का पी कैपिटल करो। ठीक है, सेव करो। अच्छा अब ये कंसोल हटा दो, या ई ई का ई कैपिटल कर दो लाइन नंबर 29 के कंसोल में, इसका ई नहीं, इसका ई बगल वाले ई, वो तुम कुछ भी रखोगे वो चलेगा।
हाँ, अबाउ कोड में अभी ए पे ऐड करो। और ठीक है, चलो ठीक है, एक बार आना नेटवर्क में। अब तो सही आना चाहिए पेलोड। नेटवर्क टैब में आओ जल्दी से। नीचे वाले पे आओ, लास्ट ए पे जो लॉगिन की हिट हुई है, क्लोज करके ना फिर से क्लिक करो। ये नेटवर्क टैब का ये कर दो, उससे नहीं करते हैं भाई। हम्म, अब वो ओपन कर दो, वो जो डिसेबल किए हो ना उसको क्लिक कर दो एक बार। अब क्लिक करो। 401 पे आना, देखना पेलोड जा रहा है, पेलोड में आना। हाँ, पेलोड सही जा रहा है, तुम्हारा पेलोड जा रहा है। अब ये हेडर्स में आना, हेडर्स में आना, हेडर्स में यूजर स्लैश लॉग इन, पोस्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश लॉग इन। ठीक है, आना कोड में। एक बार मेरे को वो दिखाना, डीबी का राउट्स, यूजर राउट्स डॉट जेएस, यूजर राउट्स बैकएंड का फाइल, राउट का फाइल ऊपर है भाई। हम्म और एक बार ऐप डॉट जेएस दिखाना बैकएंड का, नीचे नीचे और स्क्रॉल करो, एक मिनट। ऊपर आना थोड़ा, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश क्या है तुम्हारा, लॉग यूजर राउट्स पे जाना, यूजर राउट्स पे। हाँ चलो, आना कोड, यूआई पे आना, यूआई पे एपीआई स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन, अनऑथराइज्ड कहीं पे हिट आ रहा है। अनऑथराइज्ड क्यों आ रहा है? एक बार दिखाना, एक बार दिखाना एक्शन वाली फाइल जल्दी से, एक्शन वाली फाइल, यूजर एक्शन डॉट जेएस। नीचे आना, ठीक है, और उधर आना। यहाँ पर भी सर कैपिटल करना पड़ेगा क्या ये? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हो स्मॉल में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पेलोड तो सही जा रहा है। इसको मिल नहीं रहा है यार, ये लोकल होस्ट 8000 एपी स्लैश यूजर स्लैश लॉग इन, जो कि मिलना चाहिए। बैकएंड दिखाना, बैकएंड का एक बार सर्वर। यूजर नल मिल रहा है इसको वहाँ पे। सर इसमें कॉमा का प्रॉब्लम है शायद यहाँ। कहाँ पे है, कहाँ पे कोमल? एक्सेस डॉट पोस्ट के बाद कॉमा तो दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये वाले कॉमा नहीं ना, इसमें तो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। कहाँ पर कोमल? यहाँ एक्सेस डॉट पोस्ट अवेट। उसके बाद कॉमा तो नहीं देते हैं, वो तो ये स्लिंट में तुम बता रही होगी कि वो जगह उसको नहीं मिल रहा है। कोई कोमल को समझ पा रहे हैं कि वो क्या बताना चाह रही है? बताओ। कोमल, ये पोस्ट के बाद कॉमा यहाँ पर ये तो नहीं नहीं लेगा। नहीं नहीं नहीं, कॉमा नहीं, अरे ये ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं ना? टैक्टिक। हाँ, बैकटिक्स तो जब हम टैक्टिक तो डायनामिक आईडी देंगे ना, डेटा, डॉलर पकड़ते तभी देने लगते ना। डायनामिक डेटा तो हम पास कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, इस पे भी यहाँ पे भी दिया जाता है ना, ये वाला नहीं दिया जाता। ये स्ट्रिंग ना कोमल, जब हम डायनामिक कुछ पास कर रहे होते हैं ना तो हम लिटरल स्ट्रिंग्स देते हैं, तो ऐसे लिटरल स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या नाम है, किसका किसका डाउट अफजल। थी? अफजल। अफजल, एक बार उस पे आना, बैकएंड के सर्वर पे आना और दिखाना कि अच्छा 8000 से ही कनेक्टेड है। 8000 से कनेक्टेड तो है, यूजर स्लैश लॉगिन भी है अनऑथराइज्ड का। एक बार आना अपने राउट्स वाली फाइल में, यूजर राउट्स डॉट जेएस में, यूजर आउट्स बैकएंड की फाइल है, सामने दिख तो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे आओ। और एक्सप्रेस लॉगिन यूजर
एक बार लॉगिन यूजर के अंदर जाना, कंट्रोलर में। टोकन जनरेट तो करा रहे हो सही तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मे बी बिकॉज ऑफ, सुनो एक बार क्या करो, कि उसकी राउट वाली फाइल में आना, यूजर राउट्स डॉट जेएस में। यूजर राउट्स डॉट जेएस में लॉगिन के आगे ना कुछ स्लैश करके कुछ लगा दो, स्लैश एस लगा दो। और सेव करना, और एक बार ऐप डॉट जेएस दिखाना मेरे को फिर से। बैकएंड से फ्रंट एंड? नहीं, बैकएंड का ऐप डॉट जेएस, एपीआई स्लैश यूजर्स। ठीक है, अब आओ उस पे आओ, अपने फ्रंट एंड के एपीआई पे आओ, एक्शन डॉट जेएस में। लॉगिन के बाद एस लगा दो, एक बार हिट करना, ये हटा दो पहले। नहीं, यहाँ एस थोड़ी लगाओ, हटाओगे, यहाँ तो लॉगिन की पेज ही हिट करोगे ना, एपीआई में हमने चेंज करा है ना। इतना टाइम क्यों लेता है तुम्हारा बंडल बनने में? डालो ईमेल पासवर्ड और ये क्लियर कर देना नेटवर्क टैब। नेटवर्क इससे थोड़ी करते हैं, इसे उसको स्टॉप कर दो जो रेड क्लिक किए हो। चलो ठीक है, अब क्लिक करो लॉगिन पे। एस पे क्लिक करना, प्रीव्यू पे आना, नीचे कोई एस का क्लिक हुआ, फिर नीचे वाले एस पे आना। हाँ, हो गया। वो कभी कैश मेमोरी के कारण तुम्हारा हेडर नहीं पकड़ रहा था और पेलोड में प्रॉब्लम था, तो ये अब आ गया टोकन। अब तुम अपने फ्रंट एंड पे चेक करो कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रीव्यू पे जाओ, प्रीव्यू पे आओ, ये प्रीव्यू में डेटा आ रहा है ना, समझ रहे हो? हाँ। तो ये अब अपना फ्रंट एंड पे सेट कर लेना और हिस्ट्री से पुश करा देना यहाँ से लॉगिन वाले से उस पेज पे, अंदर वाले डैशबोर्ड के पेज पे। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में अटेंडेंस भी ले लूंगा, और जो आज इस वीक में एक ही क्लास हुआ है ना, तो आज का और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट यार।